Assalamu alaikum. Our today's topic is bad effects of smoking. Let's study about the chemicals present in the tobacco smoke. About 4,000 chemicals are present in the tobacco smoke, out of which are 50 are carcinogens. Carcinogens are actually cancer-causing agents. Number two, the second most toxic chemical present in the tobacco smoke is the nicotine that was used as a pesticide in the past. यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए निकोटीन को इस्तेमाल किया जाता था माजी में. Now it is present in the tobacco smoke and it not only affects the respiratory system but it also disturbs our circulatory as well as nervous system. The diseases caused by smoking are unlimited as it affects the body from head to toe. आपके सर से लेके पाँव तक ये आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है. And the leading diseases are the lung cancer, cancer in kidney, oral cavity, larynx, breast, bladder and pancreas. Emphysema and some other respiratory orders are also caused by smoking. Smoking affects the circulatory system by increased platelets, which results in the viscosity of blood and in the result of which arteriosclerosis is caused. Arteriosclerosis को आपने 9th में पढ़ा था कि किस तरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड और नैरो हो जाती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है. ये सब भी सर्कुलेटरी ये स्मोकिंग की वजह से होता है. इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं और निमोनिया बहुत आम हैं. और इसके अलावा पर्सन हु आर smokers, they have weak teeth and their teeth have stains and there are more chances of tooth loss in such persons. यानी इन लोगों के दांत जो हैं वो जल्दी गिरने का चांस होता है. ये तो वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो बॉडीली अफेक्ट करती हैं. इसके अलावा स्मोकर्स को कुछ सोशल प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं जिनमें पैसिव स्मोकर्स का रिस्क पे होना है. यानी उनके आसपास जो लोग हैं वो रिस्क पे होते हैं. हमने देखा था कि द स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम फिल्टर एंड. यानी कि पीने वाले को, सिगरेट पीने वाले को इतना ख़तरा नहीं होता जितना कि उस धुएं में रहने वालों को यानी पैसिव स्मोकर्स को होता है. तो एक तो ये प्रॉब्लम होता है, इनको फेस करना पड़ता है कि इनकी अपनी फैमिली रिस्क पे होती है और दूसरा ये कि दे हैव टू फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस. यानी इन लोगों को दूसरे लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते, इनकी स्मोकिंग की वजह से इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, अनईज़ी फील करते हैं. सो थैंक यू. दिस वाज टुडेज़ टॉपिक. अल्लाह हाफिज़.